Namaste ji, namaste. Welcome to Courtroom. So today in this series of lectures, we are going to be discussing the prelims questions that appeared in the Uttarakhand Judiciary Examination 2019. यहाँ पे मेरी टीम ने P कर दिया इसको. This should have been K. So this is UK JS 2019. UK is not United Kingdom. Anyway, silly jokes aside, let us start. Question number 1, asylum stops where extradition begins. Now this is pretty much a LLM level ka standard question. So a tip for you, not skipping the LLM papers for the judiciary prelims, especially if you are targeting Uttarakhand, may just be a good choice. This is, in fact, this was not, the statement was not made by, it was asserted by, so historical sources mein zyada clear nahi hota, but this is stark. This is a very standard thing that we teach in the LLM preparation. Now LLM preparation is always international law oriented. International law is quite a heavy aspect, but judiciary, of course, when we look at the entire question paper, so this lecture will contain 25 questions and then hum 25 aage discuss karenge. You will see that a lot much more focus on the procedural side, because after all, if we are going in for the post of a magistrate or a junior judge, then well, we really need our procedural things to be correct. Declaring a diplomat persona non grata. So another MCQ that can be framed as, what does persona non grata means? A person who is unwelcome or is not recognized is a right of the sending state, receiving state. But now this is again international law. Now the correct answer is receiving state. Now why is it a receiving state? Because जो state receive कर रहा है, state as in the country who is receiving it, they can declare the diplomat a persona non grata कि हम recognize नहीं कर रहे, unwelcome entity है, इनको आप वापस भेजें. Let us change the pen color 1 second. Yeah, this should do the trick. The term United Nations was suggested by Roosevelt. This is the LLB level question भी आप कह सकते हैं एक तरीके से. This is a very standard question that LLB में static GK में जो आता है. Roosevelt standard है, right? United Nations आपको LLB entrance, judiciary, LLM, United Nations inside out चाहिए भैया हर जगह, in and out. The principal organs of the United Nations are those whose names are mentioned in. Now this is quite deep. Now again, LLM level. The correct answer should be 7. Why do I know these answers and how do I know these answers? is मेरे को अभी टीम ने फाइल पकड़ाई है, तो that is why मैंने देखा कि ये UK है. But this is precisely what we teach at the LLM level. Any which way. तो ये जो 6 जो organs हैं, एक तो आर्टिकल 7 में मेंशन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसलिए ये आंसर याद है. अब जरा 6 गिन लेते हैं. तो 3 काउंसिल्स हैं, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड द ट्रस्टीशिप काउंसिल. देन कम्स द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, देन कम्स द ICJ, नॉट द ICC, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड देन आपका द UN सेक्रेटरीट इज आल्सो अ प्रिंसिपल ऑर्गन. तो टोटल इन ऑल 6 हो गई, जिसमें से ट्रस्टीशिप काउंसिल अब स्टैंड बाय अ हाइबरनेशन मोड में रहती है. तो ये दोनों MCQ हो सकते हैं कि विच ऑफ दी, एक और MCQ जो इसी टॉपिक से बन सकता है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन. Alright, so keep that in mind. In the Supreme Court case, it was held that preamble is a form of, forms the basic structure of the Constitution. Should be a better language. Type करते करते I think इन्होंने थोड़ी बहुत गलती करी हुई है, या क्वेश्चन पेपर में गलती होगी. This is केशवानंद भारती versus State of Kerala. केशवानंद भारती के अंदर अच्छा preamble is a part of the basic structure. तो preamble is not a part of the Constitution का क्या काम था? That is in re berubarion. Preamble is a part of the Constitution, therefore can be amended. Is Keshwanand Bharti. Alright. So यहाँ पे अगर इन्होंने क्वेश्चन ठीक से ना टाइप करा हो, I think should be is equal to part of the Constitution, because if it is the basic structure, if it forms a part of the basic structure, then you pretty much cannot amend it. But trouble is that we did amend it post Keshwanand Bharti as well, right? Out of the following, which has not been elected as a judge of the International Court of Justice? Now again, भाई फिर से LLM prelims का सवाल है ये. Now in this, Dr. Nagendra Singh, दलवीर भंडारी तो always, मतलब ये क्वेश्चन पता हो ना पता हो, दलवीर भंडारी तो हमेशा ICJ के जज, इज वेरी वेरी पॉपुलर गाय. तो ये मोस्टली अगर आपने तैयारी अगर आधे अधूरे लेवल पे भी करी है, तो ये आपको पता होना चाहिए. नागेंद्र सिंह का भी नाम बहुत ज़्यादा जुड़ता है, बट एनी विच वे अगर मुझे नहीं भी आता, मतलब बिल्कुल सर के ऊपर से चला गया, दलवीर भंडारी, होपफुली यू हैव हर्ड इट. Ranganathan Mishra was the 21st CJI of India, and
was the first chairman of the NHRC. ये बात मुझे पता है, मतलब मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द NHRC. तो अगर मुझे इस क्वेश्चन पे रीजनेबल शॉट भी लेना हो तो मैं रंगानाथ मिश्रा को मार्क करूंगा कि भैया CJI भी रहे, NHRC के पहले चेयरमैन भी रहे, कम ही चांस है कि जज रहे होंगे ICJ के. So out of the following who is not. So this is how you tackle a question such as this in a competitive examination. And I'm sure RS पाठक मुझे पता है कि थे और डॉक्टर नागेंद्र सिंह भी थे. तो दलविंदर सिंह भंडारी जी एज एन ये आपके रंगनाथ मिश्रा का काम हो गया ये ऊपर तक. Which is not a peaceful means settlement of dispute under the international law. Good offices. अगर आपने ये ऑप्शन नहीं सुना तो it's a good way to say mediation. जरा थोड़ा fancier way है, right? Negotiation is obviously a way. Conciliation is retortion. How do you retort? So basically revenge थोड़े ना ले लेंगे या सामने वाले को वापस जाके थप्पड़ थोड़े ना मार देंगे. So this is not a peaceful means. Good offices अगर नहीं सुना है तो international law में बड़ी commonly used term है, primarily used for mediation. ठीक है जी. How many members are in Security Council? 5 permanent, 10 permanent. No. 5 permanent या 10 temporary. This is the correct option क्योंकि total 15 होते हैं. एंड 10 टेम्प्रेरी तो हम इंडिया वाले भी इसी टेम्प्रेरी के अंदर हमारा जो घूमते रहता है. होमवर्क फॉर यू. 5 परमानेंट कौन कौन से हैं तो इनके पास किसके पास वीटो पावर है अपने नोट्स में डाल लीजिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओके. द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इज रेलेवेंट टू इंटरनेशनल लॉ. Yes, it is, because otherwise you are a stateless person, so concept of citizenship definitely is relevant. Is irrelevant to municipal law? No, we have part 2, we have the Citizenship Act. The concept of citizenship is relevant to as well as municipal law, both international law. Yeah, this is the correct one. Hatao pare, right? This is the correct option. A person not in the country of his parents would be the national of the country where he is born on the basis of the principle of jus soli. This is again LLB पे ही रटवाते हैं, LLB लेवल पे ही रटवाते हैं, नॉट एग्जैक्टली कि जस्ट सोलाय का मतलब क्या है, राइट? सो दिस इज बेसिकली राइट ऑफ द सॉइल, जहाँ जिस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ वहाँ का सिटीजनशिप मुझे मिलनी चाहिए. सो दिस इज जस्ट सोलाय. दिस इज बेसिकली द एंटायर डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म. तो अगर LLB लेवल पे पूछ लेते थे कि जी जस्ट सोलाय का मतलब बताओ, तो यहाँ पे भी एज सच कोई ज़्यादा कुछ टफ नहीं है. Total number of fundamental duties provided under the Constitution of India, Part 4A, inserted by the 42nd Amendment on the recommendation of the Swaran Singh Committee. Last amended, as in जो last जो duty जो introduce हुई थी, 86th Amendment in the year 2002. Duty number K, the answer is 11. There are 11 duties. Standard polity का सवाल है, not exactly that tough. When a new state is formed through formed या through revolt, in fact यहाँ पे गलत टाइपिंग है या क्वेश्चन पेपर में गलती होगी. रिकग्निशन यूजुअली ग्रांटेड इज डे यूरे तो नहीं होगी क्योंकि रिवोल्ट से अभी आप आए हैं, सो वर्ल्ड इज नॉट रियली श्योर बिकॉज यू नो बाय लॉ लीगली आप कैसे करें. डे फैक्टो रिकग्निशन हम आपकी कर देंगे कि जैसे म्यांमार में मिलिट्री कूप हो गया और लेट अस से या चलो मिलिट्री कूप हो गया एंड देन दे फॉर्म अ न्यू स्टेट, तो डी फैक्टो एज एन इन फैक्ट तो आप एग्जिस्ट करते हैं, डे यूरे तो रिकग्निशन बाद में मिलेगी. नाउ होमवर्क फॉर यू. रिकग्निशन की 2 थ्योरीज डे यूरे डे फैक्टो को रिवाइज कर लीजिएगा. क्वेश्चन पूछ रहा है तो मॉडिफाई भी कर सकता है. दिस इज द एडवांटेज ऑफ सॉल्विंग पास्ट ईयर्स. नो, which of the following amendment to the constitution is related with reservation of seats in educational institutions for the economically weaker section of the citizens? Great. 103rd GST आया था 101 से 123rd इन्होंने आपको पागल बनाने के लिए ऑप्शन दिया हुआ because that was the number of the constitution bill. तो 123rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, और बेसिकली यहाँ पे और जो अमेंडमेंट का जो एक्चुअल नंबर है 103rd. 102nd डिड व्हाट? 101 से जीएसटी आया. 100 क्या? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, राइट? 99th ये आपकी NJAC struck down as violative of the basic structure. 97th constitutional amendment inserted part 9B recently struck down. And 102nd का जो आपका जो काम करा था, it made NCBC as a constitutional body, right? So 103rd is about EWS. Now 103rd did 2 things. It got in 15 clause 6 and it got 16 clause 6 if I'm not mistaken. Double check me on this. 16 clause 6 वाला तो ठीक है, 15 clause 6 as in ठीक है, 16 clause 6 पे मुझे डबल चेक कर दीजिएगा कि 103rd ने ये काम करा था कि नहीं करा था, देख लीजिएगा, right? And how many times has Article 15 been amended? Thrice. First Amendment, 93rd Amendment, 103rd Amendment. Right? This is how good your polity should be. What are the grounds based on which आपके जो discrimination है, that is religion, race, caste, sex, place of birth.
as simple as that. Under Article 15 की जो state आपके in grounds पे discrimination नहीं कर सकता. In which of the following cases the Supreme Court has discussed the constitutional validity of triple talaq? It's Shaira Banu. You know, in which they eventually abolished it by a decision of 3:2, right? So Shaira Banu ये तो मतलब बड़ा standard सा question है. Which article of the Constitution of India provides for the reservation seats for women in Panchayat? This is 243D. This is again purely a ratta based question, very very frequent, very very common question even at the LLB entrance level these days. Article 243D. Right in rem is available. Now right in rem, tort ka concept, it is available against the world at large. Particular person only? No. That is right in personam. Government only? No. None of these? No. Everyone? Yes. Simple है मतलब इतना दिक्कत क्या है. Question 18 is who among the following put the international law as positive morality? Austin. Jurisprudence का क्वेश्चन है. स्टैंडर्ड पॉजिटिव मोरालिटी है. वो कहता है लॉ वो नहीं है इंटरनेशनल. कौन मानता है इसको? थोड़ा अश्नीर ग्रोवर टाइप आदमी था शार्क टैंक वाला ऑस्टिन. क्या अरे ये सब मुझे समझ नहीं आता, ये जो है सो है, मतलब बड़ा टू द पॉइंट ब्लंट कड़वा आदमी था ऑस्टिन. ठीक है जी. क्वेश्चन 19 एज पर इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970 क्राइटेरिया ऑफ पेटेंटेबिलिटी इन इंडिया आर. बाप रे, दिस इज सॉर्ट ऑफ आईपीआर से अगेन एलएलएम लेवल प्रश्न. इन्वेंटिव स्टेप तो जरूर होना चाहिए. केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन तो पक्का ही होनी चाहिए, अदरवाइज पेटेंट कैन नॉट बी ग्रांटेड. नाउ आई एम नॉट श्योर वेदर नॉवेल्टी वाज इंक्रीज्ड. नॉवेल्टी इज देयर बट ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन है और ये दो हैं. तो अगर ऐसा क्वेश्चन है और आप नॉट श्योर है ऑप्शन ए, तो देन ऑप्शन डी बिकम्स श्योर शॉर्ट करेक्ट आंसर, क्योंकि भाई ये दो तो इंक्लूड हो रहे हैं, तभी तो ये तीसरा करेगा और फिर तीसरे को ऑल ऑफ दीज में ले आएगा. This is how you solve even questions that you're not fully sure of in a competitive exam. So this is how you take a reasonable guess. Who is not a member of the SAARC in the following? Standard question: India, Pakistan, Bhutan. Nope. Singapore certainly is not. क्योंकि इंडिया पाकिस्तान भूटान तो हैं, मतलब मेरे को ये सार्क में ये नहीं पता कि अब सिंगापुर है कि नहीं, वाकई में मुझे मतलब देखना पड़ता. बट इंडिया पाकिस्तान भूटान तो है, तो देयरफॉर इट मेक्स द बट ऑब्वियस क्वेश्चन दैट किसी सिंगापुर तो पक्का नहीं होगा, क्योंकि या तो ये क्वेश्चन गलत है या मैं गलत हूँ. Right, most likely it is Singapore is not a part of the SAARC countries. Homework for you: there are SAARC, BRICS, BIMSTEC, right, Mekong, Ganga cooperation या convention, MC, Mekong, MGC countries. देखना जरा इंडिया पार्ट है कि नहीं इन सबका. right, SAARC, BRICS, और वो BRICS में what does S stand for, और पहले originally BRIC था. Standard stuff है to prepare for any exam, whether LLB, LLM या judiciary. It's one and the same thing. How many articles are there in the Indian Constitution? That's 395. काफ़ी बार स्टूडेंट का ये सवाल आता है, लेकिन अगर अमेंडमेंट्स वगैरह के सारे आर्टिकल गिनते हुए चले जाऊँ तो 470 पार कर जाएंगे. बट he wants us to mark 395 because this is pretty much the last article, as in जो serial number wise last article 395 ही है, right? I think it talks about repeals of the Indian Independence Act and the Government of India Act 1935, but doesn't really repeal the Privy Council ऐसा करके कोई act वहाँ पे लिखा हुआ. Article 17 of the Indian Constitution, removes untouchability, right? That's मतलब Article 18, what does it do? Titles कहीं देखा? अच्छा यहाँ पे तो नहीं दिखा. It abolishes titles, but title से पहले हमने untouchability हमने remove कराई थी. Article 17, Article 12 to 35 आपको सारे याद होने चाहिए कि किस आर्टिकल में क्या दे रखा है. There is no way out of it. Okay. Which state of India has made rainwater harvesting compulsory? This is I think 2019 का question है, तो ये उस style का current affair question है. We'll just gonna skip this. Criminal procedure code has been included in which of the following lists? Union list, state list, concurrent list. It's concurrent list है. It's there on the concurrent list. पहले 1 2 3 आइटम ही सारे जो वहाँ पे जो एंट्री लिस्ट है वहाँ पे they're talking about all of these laws. तो CRPC usually आपका जो काम है, it's very state specific thing. States get the right to amend it because it's in concurrent list. Having said that, now we are in Schedule 7, list number 3. Now there is no Part 7 in the Constitution. Having said that, also Part 1, the Union and its territories. Part 5, the Union. Part 2, citizenship. Part 3, fundamental right. Part 4, DPSP. Part 4A, fundamental duties. Part 5, as I've said, the Union. Part 6, the state. But Part 5 में chapter है 5. Homework for you. Look up those 5 chapters. सारा कुछ पता होना चाहिए after all. अब भाई जज बनने जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो एग्जाम में पता ही होना चाहिए. Which is the 25th High Court of India. This is again a current affair question. ये K है भाई. Which is the 25th High Court of India? No.
उस टाइम पे 2019 का बड़ा पॉपुलर सवाल था, क्योंकि तब उस टाइम पे तेलंगाना का काम जस्ट हो रहा था, एंड देन दिस वाज, नाउ देयर आर 25 हाई कोर्ट्स, द लेटेस्ट वन इज द अमरावती हाई कोर्ट इन आउट ऑफ, बेसिकली आउट ऑफ तेलंगाना नाउ, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश, मतलब दोनों चीज़ें। सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ कहाँ गए, पार्ट 1 हमने लास्ट क्वेश्चन देखा है जी, 25 नंबर 25 क्वेश्चन पे देखा, काम किया। एंड पार्ट 2 में चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो 25 की सीरीज़ है, क्योंकि इससे बड़े लेक्चर यूट्यूब पे कोई देखता भी नहीं है। तो hopefully this has been helpful. The tips that I provided to you, please make a note and please do the homework as well. Otherwise, these lectures really won't be of much use to you. All right, wishing you all the best. Take care. Bye.